Hello, good afternoon. Can you hear me? All right, so now we have a very tight program for today, and we are going to finish it by 1:45. So that is all for today, and then after that, you're going to have your demonstration at the usual time, that is 3 to 4. Right, so I'll wait for 1 minute more, and then I'll start. I think we're told to be here precisely at 1 o'clock, so that we started on time. I still see about 190 people. Yeah, Gauri, are you there? Yes, Gauri, good afternoon. Hello. Hello. Oh, good afternoon, sir. I thought I'm still muted. So I Okay. was writing. So what time did you finish your PPL biochemistry? Sorry, sir. What time did you finish your PBL of biochemistry today? Sir, just 5 to 10 minutes back. Okay, okay. Yes. So do you need, we shall wait for some time more, or shall we begin? So, It's 1:05. so We end time is 5 fixed minutes would because be enough. we have another thing happening after that, so that's why I can't go beyond 1:45. Yes, sir. It would be fine if we continue right now. We have about 200 students at the moment. Sorry, sir. We have about 203 students. Yes, sir. Okay. So let's start. So you know the topic for today? Yes, sir. What is the topic? So pleura and lung. Okay, pleura and lung. It is lung 1, written as lung 1, because we are going to do lung, rest of the lung in little more details in the next lecture. So today we are going to talk about only pleura in more details, and also about lung as well. So, Yes, sir. okay, now Soumya Goyal, can you tell me what is pleura? Do you have any idea what pleura is? Hello. Soumya Goyal. Hello. Hello. Good afternoon, sir. Do you Can you tell me what is pleura? Yes, sir. Sir, pleura is a covering of the lungs. It contains Soumya, also confirm. Can you see the PPT now? Yes, sir. I can see the PPT now. What do you see? Sir, the first slide heading pleura and lung first. Okay, बताओ. क्या कह रहे हो? What is pleura? Do you have any idea what is Yes, this? These two things. Pleura क्या चीज है? Hello. हाँ बोलो. Sorry, sir. Can you please repeat? क्या बोल रहे हो? Sir, please, can you please repeat what are you saying? I was asking, do you have any idea what pleura is? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Sir, the pleura is a covering which encloses the lung. Very good. It contains the two membranes, the parietal pleura and visceral pleura. Okay. And between the two layers, we have a fluid called a pleural fluid, which acts as a shock absorber and prevent the lung collapsing. So, and this the two layers. I don't know how it's going to help as a shock absorber, but okay, it does prevent from the collapse of the lung. Yes, sir. Okay, so let's try to get into the thick of the things and try to understand what pleura is. So the topic which we're going to discuss today is about the two layers of pleura, that is parietal layer of the pleura and the visceral layer of the pleura, and different parts of the pleura, which are these costovertebral, diaphragmatic, cervical, mediastinal. And
about the lungs, we are going to discuss broadly about its parts, surfaces, borders, fissures, and lobes. So this is our target till 1:45. All right, Soumya? Yes. ठीक है, चलो अब म्यूट कर लो अपने आप को. All right, so or you can stay. Okay, right. Okay, mute कर लीजिए. Okay. So now Yes, this is a picture of a lung. So because we have to talk about the pleura as we discussed, pleura is a covering of the lungs. So covering की बात करने के लिए we need to understand what is to be covered. So that is why we are going to talk about the thing which is going to be covered by this serous membrane which we call as pleura. So as we have discussed before also, pleura is like a balloon into which the lung is invaginating in, right? So that is how we have this is a picture which you see at the moment, and Karma Patel को मेरे को जरूरत है. I need Karma Patel. Karma Patel. Karma Patel, are you unmuted? Yes, sir. Okay, right. So Abhida, I need your help so that you can keep telling me what you have, if is something we can't see or we want something to be repeated which you are not understood. So please help me in that part. Okay, sir. Okay. Okay. Now what do you see in the screen? Sir, lung. ऐसा दिख रहा है कोई brown चीज दिख रहा है? Yes, sir. Okay. So this is the picture of a right lung. इसका ये video है. There will be a lot of 2-3 videos which we are going to play today. So let us try to see this video. कर्मा बताना तुम्हें क्या दिखाया, क्या समझ आया इसमें? ये this is a picture of right lung. और ये जो ऊपर वाला part है, this is called as the apex of the lung, and this is what is called as the anterior border of the lung, and this is the rounded posterior border of the lung. And Yes. so this is the surface of the lung which is called as the mediastinal surface or the medial surface. Medial surface के भी दो parts हैं, आगे mediastinal surface है और पीछे surface है vertebral surface. So let us play this video and see what is there for us to see. Now let's begin with the right. The right lung also has an apex pointed above surface, right? Apex, and downwards there is base. As you know that we can say base inferior surface also, right? Now apex and base. Now let's see the borders. It also has 3 borders. The anterior border is short, and the posterior border is again rounded and well-defined. Rounded and well-defined posterior border. So interior border, posterior border, and downwards there is a sharp border which is called as inferior border. So inferior border is all this. ये पूरा का पूरा जो sharp है ना कर्मा. Yes, sir. So this whole is the inferior border, which is outlining this surface, which is called as the inferior surface, और जिसको हम diaphragmatic surface भी बोलते हैं और base भी बोलते हैं, because this is the surface of the lung which is going to be resting on the diaphragm below. ठीक है? Yes, sir. Okay. Right? This is your inferior border. So in total, we have 3 borders: the inferior border, the posterior border, and the shortest one is your interior border. Now let's see the surfaces again. The right lung also has the medial surface, the inferior surface, and the costal surface. The costal surface. Let's see further the mediastinal surface. Medial surface. The medial surface is further divided into 2 parts again. So one is the mediastinal surface, where your hilum of right lung is present, and your vertebral surface. Right? So medial surface is again divided into mediastinal surface, where the hilum is present, and behind to it there is a vertebral
So what you can see in this diagram, the photograph, is that if you remember mediastinum, this is the area which is going to come in contact with, this is the medial surface of the right lung. So this will be facing towards the mediastinum, where we will have the, if you remember, we'll have the the heart over here. यहाँ पर heart आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा superior vena cava, and we have the arch of azygous vein draining from behind into the superior vena cava. So this is where the arch of azygous vein, and this area where these lot of structures are. Karma, do you remember we had cut these structures in one of the videos? याद है Yes, आपको? sir. है ना, हमने यहाँ pulmonary vein और bronchus काट रहे थे यहाँ पे, Yes, sir. है ना, डॉक्टर परमिंदर ने काटा था. So these are all the structures. All these structures together, they form the root of the lung. What are they called? The root of the lung. And the place where they are entering or leaving the lung, that is called hilum of the lung. Hilum तो of the lung. जगह जो है, Sir. हाँ, जगह जो, जैसे कोई भी ट्री है, ट्री का रूट होता है ना, Yes, sir. तो ट्री का रूट जो है वो तो जमीन के नीचे होता है यूजुअली, है ना. हाँ, So root is all these structures together, it is going to form the root of the lung. That is pulmonary artery, pulmonary vein हो गया यहाँ पे, इसमें देख भी सकते हो. This is the pulmonary vein, this is the pulmonary artery, and this is the bronchus. यहाँ पे bronchus दिख रहा है, arterial bronchus, hepatoid bronchus दिख रहा है यहाँ पे. So vein, artery, and bronchus. This is the relationship over here, and so all these structures which are entering the lung or leaving the lung, they are together all called as this tubular structure, and the bronchial artery, lymphatics, they are all called as what are they called? Root of the lung. Root of the lung. और जिस जगह पे वो घुस रहे हैं, the place or the area is called as the hilum of the lung. Is it okay? Yes, sir. All right, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी. Inferior surface, that it is also called as base, right? This is your inferior surface. Now let's see the costal surface. The costal surface also has. So this is the costal surface. Some people also call it sternocostal surface. So यहाँ पर ये हमारा कौन सा border है? कर्मा बता सकते हो? Sir, anterior border. Very good. ये क्या बोलते हैं इस part को? Apex. Apex, wonderful. So यहाँ पर आपको ये impression भी दिख रहे हैं ना, कुछ ये चीजें दिख रहे हैं ऐसे. This is the Yes, impressions sir. of the ribs and the costal cartilages. But these are post-mortem changes in a living lung. ये तो दो चीजें इसमें changes हैं. देखो, एक तो living lung in the initial part जब हम हो रहा था, can you make out how brownish, blackish this lung looks like? Yes, sir. So that is all because of the air amount of kind of air which we breathe in. Otherwise, at the time of birth, the whole lung appears like a pink, absolutely pink. But over a period of time, in an adult, this because of the pollution and the air amount of the bad air, polluted air we have been breathing. So this is the kind of discoloration to the lung which happens, or the damage which happens to the lungs. So anyway, so what you can see, this surface, ये हमारा thoracic cage के यहाँ पर आगे sternum आ जाएगा, and this is the thoracic cage, rest of the thoracic cage, the ribs and vertebra are going to be behind. So this is the surface which is called as the costal surface. Sorry. Now let's begin. The costal surface also has elevations and depressions. Again, due to the costal, so due to your ribs and your intercostal space, right? This costal surface bears one oblique fissure. See the direction running from upwards and downwards? It is going like this, right? So we call it oblique. The another is horizontal fissure, right? So this is your horizontal fissure. So this surface bears these two fissures. एक ही जा रहा है, obliquely आ रहा है, इसको बोलते हैं oblique fissure, and there's another fissure which is called as a horizontal fissure. We'll talk about in little detail little later. So these are the fissures which we see on this surface. Two fissures. क्या क्या नाम है पटेल कर्मा? Sir, oblique fissure and horizontal fissure. हाँ, ये देख रहे हो? ये हमारा है oblique fissure. Obliquely आ रहा है ना पीछे से आगे, और ये हमारा है horizontal fissure. You can see the horizontal fissure cutting the oblique fissure like this.
Yes, sir. ठीक है? So इसको बोलते हैं, this is on which surface? Coastal surface. Costal surface. इसको कोई लोग sternocostal surface भी बोलते हैं, कोई इसको lateral surface भी बोलते हैं, because but ये absolute lateral भी नहीं है क्योंकि ये continuity में चल रही है ऐसे. So that is why it is called as the costal surface. So जो oblique fissure है, ये हमारा शुरू होता है, ये जो ऊपर वाला part है, this is the upper lobe and the middle lobe, and this is Yes, the sir. inferior lobe of the lung. So that is why we have 3 lobes in the right lung: upper lobe, middle lobe, and the lower lobe. So आपको जो oblique fissure है, वो किस-किस को divide कर रहा है? Sir, middle lobe and lower lobe. हाँ, wonderful. So अब middle lobe, नहीं middle lobe, नहीं upper lobe को भी तो divide कर रहे हैं ना lower lobe से. हाँ, yes, sir. तो upper lobe, middle lobe को inferior lobe से divide कर रहे हैं और separate कर रहे हैं. Yes, sir. ठीक है? Okay. So the okay, all right. So जो हमारा horizontal fissure है, वो किसको divide कर रहा है? Sir, upper lobe को middle और inferior lobe से. हाँ, और ये जो point है यहाँ पे, ये मिलता है हमारा horizontal oblique fissure से. horizontal fissure जो horizontal oblique fissure से मिलता है इस लाइन पे, यहाँ पे जो एक लाइन होती है ना, mid axillary line. So mid axillary line पे करीब ये इससे horizontal fissure से मिलता है. और horizontal fissure हमारा पीछे जाता है, ये जो oblique fissure है ये पीछे हमारा posterior border पे पहुंच जाता है. ठीक है? Okay, sir. और ये जो हमारा horizontal fissure है, it is almost at the level of beginning of the, यहाँ पे बचेंगे तो अभी हम बात करेंगे, स्टर्नम आगे आ जाएगा. तो स्टर्नम के जहाँ पे फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज मिल रहा है उसके लेवल पे हमारा है हॉरिजॉन्टल फिशर, राइट? और Yes. ये मिल रहा है हमारे को ओब्लिक फिशर से इन दी मिड एक्सिलरी लाइन, राइट? और ये Yes, जो sir. ओब्लिक फिशर यहाँ पर आता है, ये करीब हमारा होता है, ये जो इसका एंटीरियर एंड है इससे अबाउट 7.5 सेंटीमीटर पीछे होता है. यहाँ पे ये हमारा इंफीरियर बॉर्डर चल रहा है ना यहाँ पे. Yes, sir. Inferior border. So the oblique fissure is going to cut the inferior border about 7 centimeters from the anterior end. Is it okay? Yes, sir. Sure. Okay. So ये हमारा हो गया राइट लंग हो गया. अभी हम चलते हैं लेफ्ट लंग पे. The another is चलो आगे चलते हैं. or now let's begin अभी with the right lung. ओके, The ये हो गया राइट लंग नीचे से. ओके, अब ये हमारा राइट लंग का पिक्चर भी आप देख सकते हो. एपेक्स है, एंटीरियर बॉर्डर है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर है. दिस इज दी सॉरी हॉरिजॉन्टल फिशर एंड द ओब्लिक फिशर. ये हमने बात की ना 7 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट from the Yes. anterior. Okay. It is going to cut the inferior border. Right. अभी हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम लेफ्ट लंग दिख रहे हैं. Again, this is the apex, the base, the anterior border. This is the posterior border. So you're looking at the left lung from the medial aspect. let's begin with the demonstration of the left lung. The surfaces and the borders which are present in the left lung. Let's begin first with this pointed part, which is called as apex of the lung. So this is apex of the lung. The lung also has the base. The base can be also said as inferior surface. Now, after the apex and the base, the lung has 3 borders. The short border is known as anterior border, which is present anteriorly. So anterior border is going to extend from apex all the way till the inferior pole or anterior end जो हमारा inferior border को वेट करेगा. This is all is the sharp anterior border. There is a rounded, ill-defined border, which is called as posterior border. Same as on the right side. So one is anterior border and another is posterior border. Downwards, there is one more sharpest border, which is called as inferior border. So in total, we have 3 borders: the inferior border, the anterior border, and our posterior border. Now, the left lung has 3 surfaces. The first one, let's begin with the medial surface. This
this whole surface is your medial surface. The medial surface is further divided into a mediastinal surface where the hilum is present, and posterior to it a vertebral surface, right? So medial surface is divided into mediastinal surface and a medial surface, sorry, vertebral surface, right? Inferiorly, if you see, in the beginning I told you that this is a base, and we can say that is a inferior surface of the left. Okay, now I'm rotating the lung, and I hope you can appreciate some elevations and depression on this surface. So again, there's a this is the costal surface, and there's one fissure which is very much like the oblique fissure, which was there on the right side also. And this oblique fissure is going to hit the similarly in the inferior border, and if you follow it backwards, it is going to reach the posterior border. And posterior border में जहाँ मिलता है, it is about जो apex है उससे करीब ये 6 सेंटीमीटर नीचे posterior border को hit करता है. Same as in the right side also. So about 6 centimeters below the apex. So that is where it's going to hit the posterior border. The surface and downwards is inferior surface. Now, there is on the costal surface, you can appreciate this fissure here. This fissure is called as oblique fissure because due to the direction of this fissure, it is oblique in shape, right? Going downwards. So this is called as oblique fissure. Okay, so that is about the two lungs. कर्मा इसको समझ आया तुम्हें? Yes, sir. क्या समझ आया? Sir, both the lungs have three borders: the anterior short border, the rounded and well-defined posterior border, and a sharp inferior border. And then Alright, they have wonderful. three surfaces. What, sir? नहीं, ठीक है, very good. So we have these two lungs, and each of these lungs is being covered by a serous membrane, which we call as pleura. So as we have discussed before also, pleura is like a balloon into which the lung is invaginating. So it is like this. जैसे कि आप देख रहे हो इस डायग्राम में भी, ये जो है, ये पूरा जो है, ये लंग है, जो ऐसे बनाया ना क्रॉस लाइंस, and this is the structures which are going to form the root of the lung. और ये बलून है जिसको के अंदर ये लंग घुस गया है. सो जो बलून का एक लेयर है वो अब दो लेयर बन गया है, isn't it? जो पिंक ब्लू है और ये ऑरेंज है, it is the same layer which is going to become the blue at some point. So the layer which is in contact with the surface of the lung, that is called as the visceral layer of the, this is the pleura, the balloon is the pleura. And at what place, ये कौन से जगह पे ये visceral parietal बनेगा? At the hilum. Hilum, क्योंकि वहीं से तो लंग इन्वेजिनेट कर रहे हैं ना प्लूरा के अंदर. ओके, सो जैसे कि आपने देखा, द लंग हैज few borders, no? Anterior border जो sharp है, inferior border is also sharp. So at these borders, what happens? At these borders, what happens? Wherever this is the which layer? The blue वाला कौन सा layer होगा? Visceral pleura. Visceral pleura, right? और orange वाला? Parietal pleura. Parietal pleura. So at some places, what we find, the visceral pleura is always in intimate contact with the surface of the lung. But parietal pleura at these bends goes little further down and then comes up to meet the visceral pleura. So यहाँ पर ये recesses जैसे बन जाते हैं, जैसे दो लेयर है, एक लेयर थोड़ा सा आगे और स्लिप करके चला गया, वो वापस आ जाता है, but ये recesses बन जाते हैं इनके बीच में, visceral और parietal के बीच में. But these will be always found at where we have these edges and the borders, क्योंकि वहीं पे turn हो रहा है pleura. So let us see where these viscera, these are being formed. Now this is a picture which you see the thoracic cage, and you can see the lung covered with the pleura. Or you can see the first rib is only low inclined. The posterior end of the first rib is at a higher level as compared to the anterior end, where it is going to be articulating with the costal cartilage to reach the sternum. So this is the apex of the lung, which is above about 2.5 centimeters above the anterior end, but
वो जो उसका एपेक्स है वो रिब के नेक के ऊपर नहीं जाता है. So which is why this is the part of the apex which is related to the, it is covered by a membrane which is called as the suprapleural membrane. Suprapleural membrane is a thick membrane which is attached, not very thick, but is a membrane which is said to be the, एक मसल है यहाँ पे स्केलेनस मिनिमस एक मसल होती है जो सब में होती है, कि उसी का टेंडन को, स्प्रेड आउट टेंडन को हम बोलते हैं suprapleural membrane. So which is attached to the inner border or the medial border of the first rib, and medial border of the first rib, and जो हमारा जो C7 vertebra होगा उसके transverse process पे यहाँ पे attach होता है. So this is how we have a membrane which is covering the upper apex of the lungs, both the lungs, right and left. Okay. So now the pleura, अभी एक पिक्चर को और देखते हैं, एक वीडियो और देखते हैं ना. कर्मा ये वीडियो दिख रहा है आपको? कुछ शुरू होने वाला है. यस क्या दिख रहा है इसमें आपको? सर, लंग्स को रैप किया हुआ है, मतलब पॉलीथीन या ऐसे हाँ, कुछ से. ये वीडियो देखते हैं, इसमें कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं. लेट अस सी वेदर दे आर सक्सेसफुल और नॉट. शुरू करें? यस सर. ओके. So let's try to understand the orientation of the visceral pleura and how the visceral pleura turns to become the parietal pleura and how the pleural cavity is oriented all around the lung. So this is a thin film which we have used to show you the orientation of these two layers of the pleura. So this layer which is sticking onto the which is in intimate contact with the lung, that is the visceral pleura, because it is in contact with the viscera. That is why it's called visceral pleura. So this visceral pleura is the one on which this is going to turn at some distance and then come back like this and come back like this, and as it reaches the heart, the two layers are going to meet and the two layers are going to go back like this, because it is the two layers are in continuity with each other. So this is the parietal layer and this is the visceral layer which is over here, and the two are going to meet over here, and where they become a fold kind of a thing which is called as a pulmonary ligament. And where my hand is at the moment, that is the pleural cavity. My hand is in the pleural cavity at the moment. So I hope that has made you understand where the pleural cavity is between the parietal pleura, which is outside, and the visceral pleura, which is in contact with the surface of the lung. Thank you. हाँ जी, कर्मा जी. यस सर. ये कुछ समझ आया अभी? हाँ सर, जो विसरल प्लूरा होता है वो एकदम लंग के सरफेस के कांटेक्ट में रहेगा और फिर वो मतलब हाइलम के आगे से फोल्ड करके वो पैराइटल प्लूरा बन. राइट. सो इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि ये जैसे एंटीरियर बॉर्डर है इसका. यस. इसी यहाँ पे देखो, हाँ, ये जैसे एंटीरियर बॉर्डर है ना इसका, ये कौन सा लंग है दिख रहा है? लेफ्ट लंग है या राइट लंग है? सर लेफ्ट लंग. लेफ्ट लंग है. वेरी गुड. सो ये जो एंटीरियर बॉर्डर है यहाँ पे विसरल लेयर तो इधर चला जाएगा, ठीक है, मिडिल सरफेस पे. जो पैराइटल लेयर जो यहाँ से आ रहा है वो थोड़ा सा आगे जाएगा और इधर यहाँ पे बोन एक होगी ना, यहाँ पे स्टर्नम. यस सर. सो वो थोड़ा स्टर्नम के पीछे जाके वापस इसको मिलेगा. सो यहाँ पे एक रीसेस बन जाएगी जो हम बात कर रहे थे ना अभी. wherever these bends are, wherever these borders are, the visceral layer continues to be on the surface, but the parietal layer will continue to go down, because यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं है. यहाँ पे is all occupied. यहाँ पे इसके मिडली हमारे पास है हार्ट और यहाँ पे जस्ट आगे हमारा स्टर्नम आ गया. सो जो parietal layer है जो आ रही है यहाँ से, जो parietal layer आ रही है, so parietal layer will go between the sternum and the lungs, and that will form a recess. ये parietal layer जो आ रही है ये वाली, ये जाएगी थोड़ा सा आगे और फिर वापस मिल जाएगी यहाँ पर visceral layer को मिल जाएगी. तो यहाँ पे एक जो प्लूरल कैविटी की एक रिसेस जैसी बन जाएगी. तो जहाँ पे थंब है एक रिसेस जैसी बनी हुई है यहाँ पे. कैन यू इमेजिन दिस? यस सर. नहीं कर पा रहे हो? ये जो एंटी बॉर्डर है ना यहाँ पे, हाँ सर. हाँ, तो यहाँ पे जो पैराइटल लेयर है वो थोड़ा और मीडियली चला गया और एक रिसेस बन गई. ओके. यहाँ पर जैसे स्टर्नम है ना,
तो यहाँ पे पैराइटल लेयर थोड़ा सा और मीडियली चली गई और फिर वो वापस आ गई मीडियास्नल सरफेस पे। सो वो एक रिसेस जो बन गई उसको हम बोलते हैं कॉस्टो मीडियास्नल रिसेस। और उसी तरह से यहाँ इंफीरियर बॉर्डर जो शार्प है वहां भी ये हो रहा है, विसरल लेयर जाएगी वापस और पैराइटल लेयर थोड़ा सा नीचे आके वापस चली जाएगी। तो ये हमारे पास एक रिसेस बन जाएगी, इसका नाम होगा कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस। क्या बोलेंगे इसको? नीचे भी डायफ्राम है। Costo-diaphragmatic recess. Costo diaphragmatic recess. So let us first talk about the various parts of the pleura which are in relation to the lung. So जैसे ये हमारा डायग्राम में भी देख सकते हो। So ये जो प्लूरा है इस डायग्राम में you can see the surface projection of the lung and the pleura. Heart भी दिख रहा है इसमें। And what we can see that we have this pleura. तो प्लूरा के दो लेयर्स हैं, पैराइटल और Visceral. विसरल। सो जो विसरल प्लूरा है वो कांटेक्ट में है थोरेसिक कैविटी के, सो वो हमारा कॉस्टल कार्टिलेज के अटैच होगा। और फिर the two layers are very close to each other, they are sticking to each other, but inner layer will be in contact, the inner layer will be in contact with the lung, that is why it's called visceral layer, and the outer layer which is the parietal layer will be in the contact with the thoracic cage. Is that okay? Yes, sir. Okay. सो ये वाला जो प्लूरा है, पैराइटल प्लूरा है, बाहर जो पैराइटल प्लूरा है उसका नाम उसके हिसाब से पड़ जाता है जिस सरफेस के वो कांटेक्ट में आता है। जैसे यहाँ पर ये प्लूरा हमारा नेक में चला गया तो इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल प्लूरा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो प्लूरा ये मिडिल एंटी बॉर्डर पे चलता जाएगा, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये मिडिल सरफेस पे चला जाएगा ना प्लूरा। हाँ। या इसको देख लेते हैं, ये वाला Mediastinal जैसे pleura. यहाँ पर भी प्लूरा आ जाएगा तो उसको बोलेंगे मीडियास्टिनल प्लूरा। और प्लूरा जब यहाँ से इधर आ रहा होगा तो इसको बोलेंगे कॉस्टोवर्टिब्रल प्लूरा, पीछे यहाँ पर इस वाले पार्ट पे इसको बोलेंगे कॉस्टोवर्टिब्रल प्लूरा। जो इधर पड़ा होगा प्लूरा, मतलब वही प्लूरा जैसे आपका पास कमरा है, आप किसी रूम में बैठे हो? Yes, sir. या बाहर हवा में बैठे हो? नहीं सर, रूम में बैठा हूँ। रूम में बैठे हो है ना, तो एक रूम में वॉल्स होंगी, एक फ्लोर होगा, एक सीलिंग होगा। हाँ जी सर। ठीक है, तो ये जो प्लूरा है ये सब लेयर पे के कांटेक्ट में है, सब वॉल्स के कांटेक्ट में अगर है तो जो फ्लोर के कांटेक्ट में आएगा तो उसका नाम बोलेंगे फ्लोर प्लूरा। जो राइट वॉल के कांटेक्ट में आएगा वही प्लूरा कंटिन्यूटी में है, राइट वॉल के कांटेक्ट में आएगा, कांटेक्ट में उसको बोलेंगे राइट वॉल प्लूरा। वही फिर हमारा छत में चला गया तो उसको सीलिंग प्लूरा, वही फिर लेफ्ट वॉल में आ गया तो लेफ्ट वॉल प्लूरा। सो अकॉर्डिंग टू द सरफेस ऑफ द लंग इट कम्स इन कांटेक्ट विद, that is given a name accordingly. So वैसे ही जैसे प्लूरा यहाँ से आएगा ये इधर चला जाएगा इंफीरियर सरफेस से, तो उसका क्या नाम देना चाहोगे आप? सर डायफ्रामेटिक प्लूरा। डायफ्रामेटिक प्लूरा, वेरी गुड। सो यहाँ पे इसको बोलेंगे डायफ्रामेटिक प्लूरा, जो सबसे पतला होता है। The thickest pleura which we see is in the this costal surface, but on the inferior surface is thin and it is in direct contact of the diaphragm. और diaphragm के नीचे राइट साइड पे तो लिवर है और लेफ्ट साइड पे हमारा स्टमक है। So, and some part of liver and stomach on the left side. So that is about the relationship of this. And let's try to understand the where these reflections of pleura are in relation to the thoracic cage. So ये cervical pleura जब आ रहा है यहाँ से anterior apex से, ये fourth costal cartilage जब आता है तो this is all behind the sternum. It almost meets the pleura of the other side also. और यहाँ पे हमारी एक recess भी बन रही है which is called as a costomediastinal recess. And it continues to go down in the middle of behind the middle of the this bone sternum, and ये हमारा कौन-सा costal cartilage है देखो, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 के लेवल पे ये टर्न करेगा towards the right side, and if I get lines back, okay, yeah, sorry, हाँ, तो ये हमारा है mid clavicular line. So this is the mid clavicular line. So what happens? So this is going to descend back of the sternum चल रहा है यहाँ पे, back of the sternum descend कर रहा है, and the right side में क्या हो रहा है, ये कौन सा costal cartilage हमने काउंट किया था अभी? 6th, हाँ, यहाँ से ये चला और यहाँ पे ये हमारा कौन सा रिब है? 7th हो गया ना? हाँ सर। हाँ, so
Hello. हाँ, ये आपको दिख रहा है फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज पे हमने बात किया था ना, फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज यहाँ पे मिल रहे थे. So right and left, then they separate out below the fourth costal cartilage, right? And then this Yes, goes sir. over here. So at the level of fourth costal cartilage, the two lines. And the right side पे क्या होगा? Descent to the, ये हमारा ZP sternal notch है. यहाँ के पीछे चला जाएगा ZP sternal notch, right? ये तो हमारा ZP sternal notch के पीछे चला गया. And then it descends from the sternal margin to the, ये हमारा कौन सा costal cartilage है? Sixth costal cartilage. Wonderful. Six costal cartilage के पीछे चला गया, right? Okay, wonderful. So ये हमारा six costal cartilage पे चला गया, ये यहाँ पर. Okay. So this is the और ये हमारा लाइन है एक मिड क्लेविकल लाइन, ठीक है. तो यहाँ पर क्या है, ये तो विसरल लेयर हो गया, अभी ये पैराइटल लेयर आ गया. So in the mid axillary mid clavicle line, this goes all the way up till the your eighth costal cartilage. Sorry, sixth costal cartilage. कौन सा costal cartilage? So where exactly? ये हमारा कौन सा costal cartilage था हमारा? Sixth. ये Sixth हमारा है ना, costal sixth. cartilage. तो यहाँ से चला. So तो हमारे कॉस्टो, ये इसको बोलते हैं कॉस्टो डायफ्रामेटिक लाइन और रिफ्लेक्शन ऑफ प्लूरा, ठीक है. सो ये हमारा ज़िफॉइड प्रोसेस से चला, पासेस बिहाइंड दी, ये हमारा देखो ना, ये था हमारा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, राइट. सो बिहाइंड दिस सेवंथ कॉस्टल कार्टिलेज it reaches the eighth rib in the mid clavicle line. Eighth rib है, eighth rib को मिलता है mid clavicle line में. So this is where the pleura is going to meet, and then as it reaches over here, यहाँ पे 10th in the mid axillary line, it will meet the 10th rib. यहाँ पे देख सकते हो आप, ये हमारा 8th rib को meet करता है in the mid clavicle line, and 10th rib in the mid axillary line. So and close to the vertebral 12th vertebra in the close to the vertebral column. So that is about the this, what is it called? The inferior limit of the parietal pleura as it can be projected on the surface. Lung की lower limit होती है in the mid axillary line in the two spaces above this. जैसे ये 6th 8 तक गया तो वो 6th हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया, यहाँ पे 10th था, यहाँ पर हो गया 8th. हाँ, so that is about two spaces above. So यहाँ पे एक recess बन जाती है between the visceral layer and the parietal layer, that is called as a costodiaphragmatic recess. और यहाँ पे एक recess बना था between the behind the sternum, that is called Costomediastinal. mediastinal recess. Now this is little different on the left side. जैसे यहाँ पे देख रहे थे, ये हमारा left side पे, because there is a heart यहाँ पर है, heart pushes the lung to the over here. So because of which a notch is formed over here. So the pleura from the fourth goes to the sixth costal cartilage, and after that it is the same as it was on the left side, right side. So that is about the various parts of the pleura: cervical pleura, the costomediastinal pleura, और the costovertebral pleura, और नीचे जो होगा वो होगा diaphragmatic pleura, और जो medial surface पे होगा उसको बोलते हैं mediastinal pleura. So that is about nerve supplies की देख लेते हैं. If you remember, in the heart we had a nerve which was coming and sticking onto the medial surface of the यहाँ पे pericardium को touch करते हुए आ रही थी ना, phrenic nerve. Phrenic nerve. So phrenic nerve will supply the mediastinal pleura, and the intercostal nerves जो हमारे आ रहे हैं वो will supply this part of the pleura. और phrenic nerve क्योंकि नीचे जाती है and it supplies the diaphragm, so the central part of the pleura is supplied by the phrenic nerve, while the peripheral part is supplied by the costal nerves, lower costal nerves. And the somatic nerve supply from these nerves, that is these spinal nerves which we are talking about, they are going to be supplying the parietal pleura only, because visceral pleura जो है वो हमारा उसकी autonomic nerve supply होती है, that is pain insensitive. It is only the parietal pleura which is pain sensitive because of the somatic nerve supply. Now let us quickly see this picture. So कभी-कभी हम pleural cavity की बात करें, this on the picture on the left side which you see is a picture of an X-ray of the normal person, normal lung, normal chest wall. इसमें हमारे को clavicle दिख रहा है, we can see the ribs, and you can see this air-filled cavities which are the expanded, fully expanded lungs, and you can appreciate the diaphragm. ठीक है?
तो ये जो एक एंगल बन जाता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं कॉस्टो मीडियास्टल एंगल, और यहाँ पर बोलते हैं कॉस्टो डायफ्रामेटिक एंगल, राइट। एक एंगल, ये एंगल किसके एंगल होंगे? एंगल ऑफ द रिब्स एंड प्रोजेक्टिंग इनटू द रिसेसेस। ये कौन सी रिसेस होगी यहाँ पर मीडियास्टम की? Costo-mediastinal recess. Costo-mediastinal recess. So as we have talked about the pleural cavity is the two pleura, parietal and the visceral, are tightly adherent to each other. They have about 5 ml of fluid, and they help to make the lung expand and prevent the lung from collapsing. अगर आपने याद होगा कोई एक्सपेरिमेंट स्कूल में किया होगा जिसमें कि बलून को एक बॉटल के अंदर फुलाते हैं, how the diaphragm, that to show how the diaphragm acts. So abhi so that is where we have a role of the parietal pleura and the pleural cavity, how it creates a negative thoracic pressure and helps the lung from preventing to collapse and expand also. It helps to expand the lung. Okay. अभी ये लेफ्ट साइड राइट साइड के पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? इससे क्या फर्क है आपको लग रहा है? से मतलब काफी छोटा सा लग रहा है। हाँ, काफी छोटा तो हो गया, बट ये सफेद सफेद हो गया ना? हाँ यहाँ पे सर। सारा, हाँ, तो इसका मतलब कि प्लूरल कैविटी में कुछ भर गया है, मतलब कि एयर नहीं है यहाँ पर, है ना? If it is not air, Yes. so it is some fluid which is, because air does not allow, it allows the X-rays to pass through them, so that has got exposed and that has become dark. So X-ray में तो ये होता है ना, whatever that is allowing X-rays to pass, the film in that area gets exposed and that appears dark gray. तो जहाँ पे वो blunt हो गया, जहाँ पे वो opaque हो गया, जो नहीं दिखा, means there is a collection over here. So these is a sign of collection in fluid, and that is what we call as a pleural effusion. So that could be because of some pathology in the lung, and that is caused inflammation of the pleura and causes, because pleural cavity is a closed cavity. जैसा भी हमने समझा, it's a closed cavity, and it is a mesothelium lined by which is secretory. So under stimulation, it can get start secreting, and secretions कहाँ जाएंगे इस closed cavity में? अगर आप dependent areas में जाएंगे ना, so if one person is standing, so dependent area become these areas, the costodiaphragmatic recesses. एक और पिक्चर देखते हैं, नेक्स्ट वाली। इस पिक्चर में आपको कुछ समझ आ रहा है? जो लेफ्ट वाली पिक्चर तो वही पिक्चर है जो पहले देखी थी, राइट वाली पिक्चर चेंज हो रही है ना? यस सर। राइट वाली पिक्चर देख रहे हो आप? राइट वाले पिक्चर में, लेफ्ट वाली पिक्चर तो नॉर्मल एक्सरे है। अब लेफ्ट वाले पिक्चर में, बिकॉज अभी टाइम बहुत कम है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला जो एंगल बताया था ना मैंने आपको, कॉस्टो-मीडियास्टिनल एंगल, यहाँ पर इस एंगल को देखो, कुछ फर्क है दोनों में? और ये वाला एंगल भी देखो, कुछ फर्क है दोनों में? यहाँ पे ये एंगल ब्लंट है ना? हाँ This is सर। not as acute. Now this, इसका मतलब what does it signify? सर शायद मतलब चेस्ट कैविटी की साइज भी छोटी सी लग रही है, मतलब एक्सेल किया हो ऐसा कुछ। कोई फर्क नहीं, वो तो दूसरे आदमी का है ना, थोड़ा बड़ा छोटा हो सकता है। सॉरी सर। But what important is this, that this has this, ये जितना अच्छा सा एंगल दिख रहा था यहाँ पे, इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें कुछ कलेक्शन है इस एरिया में, because these are the dependent parts, है ना? जब आदमी खड़ा होगा तो ये रिसेस में यहाँ पे हो गया। These are the press, this means some fluid is getting collected over here. So this is again a sign of, जो पहले हमने एक फोटो देखी थी तो pleural effusion बहुत सारा है, हाँ सर। but इसमें अभी स्टार्ट हुआ है, थोड़ा सा ही है। So this is what can make you understand there is a small collection of fluid in the recess. All right? यस सर। Okay. अच्छा, एक और फोटो यहाँ पर है, इसमें ये दिखा रहा है, ये एक सीटी स्कैन है जिसमें कि ये दिखा रहा है कि ये दिस इज ऑफ द, वी आर वाचिंग इट फ्रॉम बिलो, ये स्टर्नम दिखाई दे रहा है, और ये क्या ट्यूब हो सकती है? स्टर्नम, वर्टिब्रा है ना? स्टर्नम तो आगे है, सो वर्टिब्रा के लेफ्ट साइड पे जो नीचे से देख रहे हैं, फुट एंड से, दिस इज द एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा। ये लंग दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये हार्ट दिख रहा है, ये थोरेसिक केज दिख रहा है, और ये लंग दिख रहा है। लंग के आगे देखो, राइट साइड पे तो सब ठीक है, पर लेफ्ट साइड पे देखो बहुत ही काला 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 दिख रहा है। Yes, लंग से भी काला है, इसका मतलब क्या हुआ? The pneumothorax. Huh? Yeah, it is air, no? And this is what is called as a pneumothorax, collection of air. तो ये air कहाँ से आएगी? Air pleural cavity में। जैसे यहाँ पे pleural cavity कोई stab injury ऐसा कुछ? Some puncture. See, you can also see a puncture here, which has made an opening through this and has made the air to pass into this.
and that is called as a pneumothorax. So pneumothorax will also cause the lung to collapse. The lung will become smaller, and so will also हमारा जबकि pleural effusion में lung जो है वो compress हो जाएगा, right? So I think that is all for today. Try to revise this and see next time we हम मिलेंगे. Then we will discuss about the rest of the lungs in more details. We'll talk about the various surfaces in lung, impression relations of the lung, and the blood supply, nerve supply, lymphatics of lung, and the structures in the hilum, relationship, the borders, bronchopulmonary segments. This is all we are going to cover next time. So, okay, thank you very much. Good afternoon. If you have any questions, you can ask with the table teachers, or you can ask next time also, or you can leave in a question box also. Okay, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. अभी समझ आया हुआ करना है? हाँ सर. किसी और से पूछते हैं. Yes, sir. कौन बताएगा? कोई बताना चाहता है? मुकेश शर्मा बताना चाहता है. मुकेश शर्मा जी बताइए, कितना समझ आया आपको? गुड आफ्टरनून सर. हाँ, गुड आफ्टरनून, बताओ. सर लंग्स के बॉर्डर्स पढ़े सर, लंग्स के सर्फेसेस पढ़े, सब प्लूरा की मार्किंग्स सही सर आ रही है. वो तो ठीक और है, सर प्लूरा ठीक है, पर समझ आया कि नहीं आया? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. यस सर आ गया. Now we have a demonstration from 3 to 4. So we have a break from now to 2, now to 3, right? ओके सर. So 3 to 4 demonstration आपका. Contact your people. थैंक यू सर. Hello.